So let's start understanding what is the greenhouse effect. Now this greenhouse effect is actually the blessing which is given by God to keep the earth warm during night. Now what happens, because during night there is no solar radiations and earth might get so cold that the survival of anything will not be possible. Some solar radiations which come to the earth, they are absorbed by the earth's surface. That means who absorbs some greenhouse gases, which are carbon dioxide mainly, and then methane, then CFCs, and then other, that's nitrous oxide. This we'll study later. So these radiations are absorbed by the earth's surface, and this earth's surface is kept hot by this trapped radiations. Some radiations are forwarded or reflected back to the atmosphere. Now these big wavelength radiations which pass through the atmosphere, some are absorbed and re-emitted in all the direction by greenhouse gases molecules, and thus scattering of this radiations will make earth's surface warm and it will lower the temperature of the atmosphere. So the earth radiation, which earth surface emits the radiation that are given out in the atmosphere, but the solar energy is trapped here in the earth and thus keeping this warm. So this effect is known as greenhouse effect, and this greenhouse effect is used in colder regions. What happens in colder regions? You cannot grow plants because there is no heat. So what they do, they make glass houses. So they make this type of glass house. Glasses can be made of glass also, and it can be made from this plastic also. So this is a glass house, and what happens in the glass house? These are the glass walls. Now this glass walls acts as a blanket. It will allow the sun's energy to come inside, but it will not allow the inside energy to go back, because it is the insulator of, or it is a bad conductor of heat. तो पूरी रात ये अच्छे से ये चीज़ warm रहेगी because of that trapped solar energy in the morning, and this is known as greenhouse effect, and these houses which are built are known as greenhouse. Same is the example when you close a car parked in the sun. तो what happened? कितनी ज़्यादा, मतलब बाहर से अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है. तो सेम वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है. If you close the car and it is parked in the sun, and when you open the car and you get inside, तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है लेकिन अंदर बहुत गर्म होता है, and that is because of green house effect, because कार के जो ग्लासेस वगैरह हैं, जो उसके रूफ है, वो अंदर की एनर्जी को बाहर रेडिएट नहीं करने देती है, जबकि सोलर एनर्जी कैन ट्रैवल इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. But now what is happening? Due to the air pollution, जो total amount of carbon dioxide था एटमॉस्फेयर में, that has increased, और अदर गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज हो गई हैं, जैसे कि मीथेन, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड व्हाट इट इज़ हैपनिंग कि जो उनको थोड़ा सा ट्रैप करना था वो बहुत ज़्यादा ट्रैप करने लगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रैप कर रही हैं, हीट एनर्जी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दे हैव क्रिएटेड अ थर्मल ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, trapping more heat and increasing the greenhouse effect. Greenhouse effect increase हो रहा है because of the pollution, because of the greenhouse gases, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. जो ग्लोब का हमारा टेम्परेचर है वो और बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ greenhouse gases, और उसकी वजह से अर्थ इज बिकमिंग more hot, and that is why this process is known as global warming. Let's see the percentage of the gases. Carbon dioxide is 60%, so 60% carbon dioxide is causing global warming, and then methane is 20%, CFC is chlorofluorocarbons, okay, is 14%, and nitrous oxide is 6%. So these are the greenhouse gases which are increasing the temperature of the earth. And you can see here this thermal blanket is caused. ये ऑरेंज कलर का जो है थर्मल ब्लैंकेट है जो इन गैसेस ने फॉर्म कर दिया है, एंड जिसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस हैं
जो रिफ्लेक्ट होनी थी अर्थ से वो नहीं हो पा रही हैं, बाहर की तरफ नहीं जा पा रही हैं, एंड अर्थ इज़ बिकमिंग हॉटर डे बाय डे, सो दस इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ट्रैप तो सारी सोलर रेडिएशंस हो रही हैं अंदर, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ these gases. Why carbon dioxide is increasing? The percentage of carbon dioxide is increasing in the atmosphere. First is deforestation, because we are cutting down the plants, we are cutting down the trees. And what is the function of trees? To remove carbon dioxide from air, to use it during photosynthesis. So no photosynthesis, that means carbon dioxide is increasing. Then air pollution, industries, burning of fuels, chemical weapons, they are increasing the carbon dioxide amount in the atmosphere. Now, what are the effects of this global warming? It will cause very serious consequences. हमें इसके बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे. The average temperature of the earth has risen up to this in the past 100 years. 100 years में 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर गया है, और इसी तरीके से जैसे जैसे और इंक्रीज़ करेगा, जितनी भी हमारे पोलर रीजन्स हैं उसमें जो आइस है दैट विल मेल्ट and floods आएंगे coastal regions में, and island will be submerged. Gangotri glacier in the Himalaya has already started melting. Then ecological balance हमारा disturb हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल, कहीं पे रेनफॉल के पैटर्न में चेंज हो जाएगा तो एग्रीकल्चर में चेंज होगा, फॉरेस्ट में चेंज होगा, कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो विल बी एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द टेम्परेचर, क्योंकि उनको किसी और टेम्परेचर में रहने की आदत है. और क्रॉप साइकिल, जो हमारी ठंड वाली फसल है, गर्मी वाली फसल है, वो सब भी पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. देयर विल बी चेंज इन द क्रॉप साइकिल. सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. हाउ कैन वी बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर सो दैट दिस percentage of carbon dioxide is maintained and there will be no serious effects of it, and we have to work seriously for this. So first is to plant trees. As you all know, we have to plant trees. Growing more trees and plants will decrease the level of carbon dioxide. Then don't waste anything. Reduce your waste and reduce the consumption of fossil fuel. क्योंकि जितना भी fossil fuel जलाएंगे, there will be carbon dioxide. A smokeless source of energy we should use. Solar energy. We should use solar energy more and more. We should use biogas more and more. So ये energies use करनी है हमें. Filters use करने हैं chimneys and factories and power houses में. And then we have to use this, reduce, recycle and reuse. Okay, reuse. We should reuse the things so that things can be used more and more. Walking करेंगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी कार्स एंड ऑल एमिट करती हैं वो बंद हो जाएगा. उसकी वजह से हम पेट्रोल डीजल कम यूज़ करेंगे और वाटर को कंजर्व करेंगे. सो these are some steps which we serious steps which we can take. Now many countries have done an agreement to reduce the emission of greenhouse gases, and this agreement is known as Kyoto Protocol. Okay, Kyoto. So this Kyoto Protocol is agreement where all the countries which have agreed on this protocol, they have said कि हम अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है या ग्रीन हाउस का जो एमिशन है उसको कम करेंगे, उसको चेक करेंगे. So this was all about carbon dioxide.